नमस्ते, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं जूही और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। एक बहुत ही क्यूट सा कॉमन सा टॉपिक, पर इसका हमारी लाइफ में क्या रोल है, बच्चे की डेवलपमेंट में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, ये आपको मेरे इस वीडियो से पता चलेगा। तो आज का टॉपिक है बर्ड फीडर। हम बर्ड फीडर कैसे बनाएंगे और इसकी बेनिफिट्स क्या है, वो मैं सब कुछ आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो let's begin. So let's watch the video that how can you make bird feeder, then I will share you the benefits. Say hi. Hello. Namaste. नमस्ते। Okay, bird feeder बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आटा, पानी, आटा गूंदने के लिए, डो बनाने के लिए, टिश्यू रोल, one thread or rope, and some grains. So let's start. हमारा डो रेडी है। आरिकेत, डो इज रेडी? यस, सो आवर डो इज रेडी। अब हमारा इसका नेक्स्ट प्रोसेस है, हम इसको साइड कर देंगे और इसको ऐसे करेंगे। हाँ, करो। ये क्या है? We'll do this. See, इसको एक रोटी की तरह थोड़ा सा ये जितने भी ग्रेन्स हैं हम इनको ऐसे ऐसे इसमें डालेंगे। डुबू डालो। अब इसको मैं ऐसे प्रेस कर दूंगी। ये देखिए, इसमें जो भी एक्स्ट्रा होगा वो बाहर निकल जाएगा अपने आप। अब दिस एम्प्टी टिश्यू रोल जो है हमारा, हम इसको इस पे रोल करेंगे लाइक दिस, इस तरह से। इट्स ओके, अगर कुछ एक्स्ट्रा जो है वो नीचे गिर जा रहा है उसको बाद में हम फिर से स्टिक कर सकते हैं। सी, देख रहे हैं आप, जितने भी ग्रेन्स थे इसमें स्टिक हो गए। नाइस, सी दिस, हैव अ क्लोज लुक। अब रोल स्टार्ट होता है इसका। नाउ वी विल टाई इट।
देखिए यहाँ पे कितने सारे बर्ड हाउस हैं और यहाँ का कम्यून खुद से अरेंज करता है यहाँ बर्ड्स के लिए, जंगल में बर्ड हाउस, बर्ड फूड, बर्ड फीडर्स। स्टॉकहोम इज लव बिकॉज यहाँ नेचर से लोगों को इतना प्यार है। एंड आई ऑल्सो लव स्टॉकहोम बिकॉज दे लव नेचर एंड आई ऑल्सो लव नेचर। कम सो इसको हैंग करेंगे। So many bird house. See. Hello birdie, where are you? हम नॉर्मली बर्ड के लिए यहाँ पे ऐसे ही ग्रेन्स अरेंज करके जाते हैं। इस बार हमने सोचा हम बर्ड फीडर बनाएं और ये सक्सेसफुल रहता है हर बार। सी माय किड्स आर सो हैप्पी। बच्चों को भी कहीं ना कहीं नेचर से बहुत प्यार हो जाता है और ये जरूरी भी तो है। ओके सो सी यू अगेन, बाय बाय। बाय बोलो दिश्री, आई किड्स से बाय। Okay, bye. Bye. I was the cameraman. Making a bird feeder can be educational and fun activity for kids that also has several benefits and importance in a kid's life. There are many reasons that a bird feeder can be valuable in child's life. So I will explain few points on it. Number 1, it encourages an appreciation for nature. How? Because making a bird feeder allows children to interact with and to observe birds up close. And this can help develop deeper appreciation for nature and understanding of the importance of wildlife. Now, my next point, promotes creativity and problem solving skills. Yes, making a bird feeder can promote creativity and problem solving skills. It encourages children to think creatively and develop solution to challenges they may encounter. Now, my third point, develops a sense of responsibility. Because feeding birds requires consistency and responsibility. See, children can learn about the importance of providing food and water to animals. And they can develop a sense of responsibility for the well-being of wildlife. Now my fourth point, foster a sense of empathy and compassion. By feeding birds, children can develop empathy and compassion for animals. This can help them develop a greater understanding and respect for all living things. Now my last and very important point, provides an opportunity for outdoor and fun activity. Yes, making a bird feeder is an outdoor activity, fun activity, isn't that true? Kids will have so much fun by doing this activity. Think about it. It also provides an opportunity for children to explore about nature and learn about different types of birds. Overall, making a bird feeder can be a valuable experience for children that promotes learning, creativity, responsibility, and a deep appreciation for nature. See, so many things are improving by making a bird feeder. आज के टाइम पे बच्चों का नेचर से कनेक्टेड होना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माने में बच्चों में अभी से डिप्रेशन बढ़ रहा है, अभी से स्ट्रेस आ रहा है। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, उसके पास तो इतना है। क्यों? सोशल मीडिया पे शो ऑफ ही तो चल रहा है। कहीं गेम्स का शो ऑफ है तो कहीं ड्रेसेस का शो ऑफ है। क्या हो रहा है? शो ऑफ ही हो रहा है। तो वो आपके बच्चे को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। तो इस टाइम पे आपका आपके बच्चे से बॉन्ड अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसकी शुरुआत बचपन से ही, छोटे पर से ही स्टार्ट हो जाती है। तो अपने बच्चे के साथ ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते रहिए, उनके फ्रेंड बन के रहिए, सो दैट कल को अगर उनका कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो उनके साथ लाइफ में तो वो एटलीस्ट घर में आके बताने में डरे ना।
आपसे शेयर करने में ना डरे। तो ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, ये बॉन्ड है जो बच्चा आपके साथ क्रिएट कर रहा है और आप अपने बच्चे के साथ क्रिएट कर रहे हैं। तो फॉलो करिए ये सारी चीज़ें और आप भी खुश रहिए, बच्चों को भी खुश रखिए। बच्चे तो खुद ही खुश रहते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ करके। और देखिए, मैं सिर्फ लेक्चर नहीं देती हूँ, आई ऑलवेज शेयर अ वीडियो जिसमें मैं भी ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ और उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे आ रहे हैं मैं आपको ये भी बताती हूँ। सो मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं या कोई भी टॉपिक्स जो आपको लगता है मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ, आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए, आई विल मेक वीडियोस ऑन देम। ओके, फिर से मिलूंगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।